Virginia Garden. Happy birthday, Honda. Thank you. To Govinas. We love you, man. Happy birthday, man. Thank you so much For giving us our beautiful Virginia Garden. Thank you, ma'am. We will always love you, ma'am. Hello everyone, my name is Sakshi and I am the class teacher of class nursery. Today, on this auspicious day, I would like to wish the co-founder of Honor College, late Mrs. Virginia Singh, a very happy birthday. A very happy birthday, ma'am. And on this auspicious day, I would like to share few things. Earlier, I was the student of Honor College, and now I am teaching in my own school. I remember when I was a student, late Mrs. Virginia Singh ma'am used to give motivational speeches in the assembly, and children were so motivated every time by her speeches. And she used to love children a lot. And today I am the teacher in Honor College. I'm so proud to tell that the block of pre-primary section is named after her. And the name of the pre-primary section block is the Virginia Gardens. So, a very happy birthday, ma'am. Mrs. V.S. Singh was a beloved founder, manager, and the guiding spirit of Honor College. She was born on August 30, 1929. Sporty and vibrantly intelligent, bordering to genius. She was also the angel of her American missionary principal, Miss Everly, at Girls Mission School, Mathura. She had vibrant personality. She was perfect in her spoken skill, and she read, quoted Shakespeare, Chaucer, etc. as common parlance. She was committed to education, and Honor College reflect the commitment. So I, on behalf of all the students of Honor College, wishing our beloved manager ma'am happy birthday. May the winds of heaven blow softly and whisper in your ear how much we love and miss you, and wish that you were here. Wishing you a very happy birthday, Virginia ma'am. Missing your smile, your voice, your sense of humor, your charm, your way of making everything better. Mostly just missing you. Happy birthday, Virginia ma'am. Hello everyone, my name is Priyanka Gupta and today I am here to share my thoughts on the auspicious occasion, which is the birth anniversary of our respected co-founder and beloved ma'am, late Mrs. V.S. Singh. Ma'am has not only laid down the foundation of Honor College but also placed a milestone in building the bright future of the children. As we say, education gives enlightenment. For me, Honor College is not just a college but a place full of sweet memories, as I have been associated with Honor College both as a student and now working as a faculty. So I have observed a lot of positive changes that took place in the college. And this all happened due to the hard work of our respected co-founder, late Mrs. V.S. Singh. Her ideology gave new direction to education and encouraged us all to promote education in its best way. I really feel fortunate to be a part
of Honor College, which constantly work beyond the boundaries in shaping the bright future of our children and fulfilling its motto, "Let the lamp of wisdom light the way in its real manner." Thank you so much, and wishing once again a very happy birthday to our co-founder, late Mrs. V.S. Singh. Thank you, everyone. Mrs. V. Singh, a beloved manager ma'am, had a vision of empowering, joyful and creative life for students as they concentrate on assimilating knowledge in preparation for productive and successful life as good human beings and good citizens of the country and the world by transforming learning into a pleasant, essential and delightful experience so the student may achieve their highest potential of learning, growth. Your life is blessing. Your memories are treasure. You are loved beyond world and missed beyond measure. Wishing you very happy birthday, Virginia ma'am. Thank you. नमस्कार। आज विद्यालय की सह संस्थापिका श्रीमती V.S. सिंह की जन्म पुण्यस्मृति है। उनके जन्म दिवस की इस पुण्य तिथि पर मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ। विद्यालय की सह संस्थापिका श्रीमती V.S. सिंह एक शिक्षाविद और कठोर परिश्रमी थी। उनका मानना था कि राष्ट्र का प्रत्येक बच्चा मूलभूत शिक्षा से संपन्न हो, फिर वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने पति श्री सिंह के साथ हॉर्नर कॉलेज की स्थापना की। विद्यालय को सभी मूलभूत सुख सुविधाओं से संपन्न किया, फिर वो चाहे कंप्यूटर की शिक्षा हो, चाहे खेल के संसाधन हो, फिर वो चाहे भौतिक उपकरण हो। हर तरह की सुख सुविधा से हॉर्नर कॉलेज को संपन्न किया। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों के सामने कभी हार नहीं मानी। जिस समय मैंने हॉर्नर कॉलेज में एक हिंदी सहायिका के पद पर जब मैं आई, मेरी नियुक्ति हुई, तब श्रीमती सिंह का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। वे यदा कदा ही विद्यालय आया करती थी, परंतु घर से विद्यालय की सारी प्रक्रियाओं का संचालन वे कुशलतापूर्वक करती थी। विद्यालय की सारी गतिविधियों का उनको पता रहता था कि क्या विद्यालय में हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वो घर से बैठ करके पूरा संचालन करती थी। एक कुशल संचालिका थी। उन्होंने उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने जो प्रेरणा हमको दी, आज हम उसी प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वे गिरते स्वास्थ्य के कारण कभी भी उन्होंने उस गिरते हुए स्वास्थ्य को कभी अपने जीवन की बाधा नहीं बनने दिया। हमेशा विद्यालय के कोई भी जो भी मुख्य हमारे जो कार्यक्रम होते थे उन पर विद्यालय आती थी, भले ही चाहे वो वॉकर पकड़ के चल के आती थी, लेकिन हमेशा आती थी और विद्यावित करती थी, हम लोगों को प्रेरित करती थी। उनके जो प्रेरणा भरे जो शब्द थे वो हम लोगों को बहुत ही उत्साहित करते थे और कार्य के लिए हमें प्रेरित करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद की ब्लेसिंग्स हम लोगों के ऊपर सदैव रहती है, जिसके कारण आज हॉर्नर कॉलेज सीढ़ी दर सीढ़ी आगे ऊपर चढ़ रहा है और उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने इस विद्यालय को अपनी सबसे छोटी पुत्री डॉक्टर माला मेहरा को
सौंपा और उन्होंने श्रीमती सिंह के सपने को बखूबी निभाया और साकार किया और आगे भी करती रहेंगी और वर्तमान में भी कर रही हैं। आज हमारा विद्यालय नामचीन विद्यालयों में जाना जाता है, जो उन्नति के पथ पर अब जो रास्ता हमने पकड़ लिया है, हमने अब उसको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। डॉक्टर माला मेहरा श्रीमती सिंह के सपने को लेकर के आगे बढ़ रही हैं और हमारा विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। आज मैं उनकी जन्म तिथि के अवसर पर उनका स्मरण करते हुए पूरे हॉनर परिवार की तरफ से, डॉक्टर माला मेहरा हमारी प्रधानाचार्य की तरफ से, सपोर्ट स्टाफ की तरफ से, सभी की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें शत Along with all my fellow mates of senior section, extend my heartfelt wishes to one and all on the birth anniversary of our co-founder Miss V.S. Singh. I would also look forward to take this college to a great height, fulfilling the dream of her. This institution has been a dream project of hers, and I'm sure that her blessings are always with us to accelerate the growth of Honor College. Wish you a very happy birthday, Manager Ma'am. In the time of Corona pandemic, we cannot be together to celebrate this auspicious day. But virtually, we are together, and we remember her graceful ways and demeanor, her diligence and perseverance all through her tenure as a principal and manager has helped on founding the steady foundation on which school is prospering. Warm greeting to everyone out there. Today, I feel proud to be a part of the celebration of the birth anniversary of our beloved co-founder, Mrs. Virginia Singh. Every year, we look forward to this day because we used to have a grand literary event, Literati. It used to be a befitting tribute to our co-founder, Mrs. Virginia Singh, who was a great educationist and who traveled all over the world seeking as well as imparting education. I stay